Namaskar. Welcome to everyone in Snigdha Biswas YouTube channel. I am Snigdha Biswas. After a long time, new video is uploaded. So I am very excited. Today I will try something with watercolor. So without wasting any moment, let's start the video. You know what? The most interesting things of today's videos is today I will try to create a beautiful art piece by only use of my color brush and color. And you all know Snigdha color करने की दीवानी है. I mean I love to color more than drawing. Wet and spread टेक्निक का यूज करके पूरा पेपर में कलर ऐड कर लिया है. वेट एंड स्पेड जो टेक्निक है इसका यूज मैं बहुत सारी वीडियो में कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एंड यस, जो मेरी चैनल में न्यू है दे शुड चेक इट. I have added some detail in this painting. After that, the most important part of this video is to create a main element. As an element, I try to create a happy girl. Yes, I said happy. And we all should stay happy always. I know very well that the journey of a life is not so easy. But we should always remember that our life is a blessing. So don't waste it being sad. Always be happy. And I am really blessed. बिकॉज आप लोग इतना कीमती टाइम मुझे देते हो और इतने सारे प्यार देते हो. थैंक यू सो मच टू ऑल मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए. एंड थैंक यू अगेन टू सब्सक्राइब माई चैनल. ओह, वन थिंग आई ऑलवेज फॉरगेट दैट इफ यू वांट देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम Snigdha Biswas 394. The link is below in description box. Yes, now I try to make her hat and after that I will paint her hair also. सारे कलर की एक बेस देने के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हर एक पेंटिंग के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो है डिटेल ऐड करना. तो अब मैं इस पेंटिंग में जान डालने वाली हूँ क्योंकि अब बारी है डिटेलिंग करना. तो मैं इसमें डिटेलिंग कर दूंगी. आई थिंक शी इज नेचर लवर लाइक मी. And what you think about her? Don't forget to comment in the comment section. And the painting is almost complete. Wow, I really love it. Snigdha will come back with new videos within 7 days. I really love to work with nature related videos. If you love it, don't forget to like this. And this is the final look of my art piece. This art piece is look really so pretty. Thank you so much for watching.